Hello students, once again your Nanda sir is back with a new problem. Today I am taking a problem of quadratic equation in which two roots are given and they are asked to form a quadratic equation. तो अगर ऐसे सम्स में जहाँ पर आपको दो रूट्स दिए होते हैं क्वाड्रेटिक के और आपको इक्वेशन बनानी है, सो उसमें के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड है. इट्स अ 3 स्टेप प्रॉब्लम. सोल्यूशन हेयर इन स्टेप 1. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें रूट्स दिए हैं उनको हम नाम देंगे. लेट द रूट्स, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट्स होते हैं और उन दोनों रूट्स को हम अल्फा बीटा की तरह प्रेजेंट करते हैं. द वन रूट इज नेम्ड एज अल्फा, वन रूट इज नेम्ड एज अ बीटा. अब किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. इन स्टेप 1 विल कैलकुलेट सम ऑफ द रूट्स. इट इज रिटन एज SOR, सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. This is written as 3 plus 4, 7. In step 2, we write product of the roots, that is alpha beta. 3 multiplied by 4, that is 12. And in step 3, we write a equation, or you can say a formula. So because I am using a formula, so I am writing the formula with the green color. It's a x square minus SOR, sum of the root into x plus product of the roots. So now I'll substitute the values of sum of the root and product of the roots that I have calculated above in the above formula. So here I can write it's a x square minus sum of the root I have calculated 7 plus product of the root I have calculated 12. So or I can say the required quadratic equation, or I can say this is the required quadratic equation when two roots are given to us. So this is another example. You can see it's a x 1 by 2 and 3 by 4 is given. Same way हमें start कहाँ से करना है? The roots, let the one root is named as 1 by 2 and the other root is named as 3 by 4. So two roots are taken as 1 by 2 and 3 by 4. In the first step, we'll calculate sum of the roots. It is written as 1 by 2 plus 3 by 4. We'll simplify. आप जानते हैं कि जो भी फ्रैक्शन टर्म होती है उसे हम लोग हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. So this gives me 5 by 4. And then I calculate product of the roots, POR, product of the roots. It's a 1 by 2 multiply 3 by 4. Product of the two roots that is given in the equation, it's 3 by 8. And now we write the quadratic formula, a quadratic equation, as it's a identity or formula. So I'm writing with a different color. It's a x square minus sum of the roots in bracket plus you can write product of the root in also in bracket. Now substitute the value that we have calculated above. It's a x square minus, what is sum of the root we have calculated? 5 by 4 into x. What is product of the root we have calculated? 3 by 8. And in the last we can write this is the required quadratic equation. We can write it's a required quadratic equation when two roots are given to us. So friends, बहुत आसान है मैथ्स. मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इट्स अ ईजिएस्ट सब्जेक्ट दैट यू पीपल्स आर डीलिंग इज मैथ्स. सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है. छोटे छोटे सम्स होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा उनका कंसेप्ट वर्कआउट कर लीजिएगा एंड देन यूल सी दैट यस द मैथ इज क्वाइट ईजी. So जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन आए, whenever they do say form a quadratic equation, every time you will find the two roots are given. So for that question you need to do 3 steps only. Number 1, in step 1 you will find sum of the root. Number 2, you will find product of the root, and in the third step you write the equation or a formula substituting the value and you will have the required answer.